तेरा पीपीओ क्यों नहीं आया भाई? तो पहले तो ये बता, फंडे बाद में देना. So the reason behind the PPO, I think lack of communication. I think I say because when I was giving an interview, it was totally online interview. So I feel like somewhere I was not trying to deliver what I want to deliver to the interviewer. What kind of preparation goes into to get a good placement, Arvind? Extra things you are doing to make yourself as unique, as like to highlight your USP. College doesn't matter that which college you are going, company to will come and go, but only thing that you will take a good placement or not, that depends on you, that how you perform, how confident you are, and how much you are working on yourself. All right, hi everyone. अच्छी प्लेसमेंट कैसे लेनी? कई लोगों की प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है, कई लोगों की नहीं होती है. Times are tough, markets are tough, and some people are able to get good placements. Today I am here at IIBM and यहाँ पे कुछ लोग हैं जो Deloitte, Marico, Trinamax, BNY Mellon के अंदर काम कर चुके हैं. बिना BNY Mellon क्या है जिनको नहीं पता, get your finances right. फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं पता तो पता होना चाहिए. And these guys have also interned with Colgate-Palmolive and एक और ने internship Nestle. and Dabur as well and Nestle as well. तो यहाँ पे ब्रांड खड़े हैं, डाबर, नेस्ले, मैरिको, डिलॉयट, BNY Mellon और कौन सा एक और? कोलपैल, कोलगेट पामोलिव. ये सब यहाँ पे बैठे हुए हैं. चारों बंदे ने अलग अलग जगह समर इंटर्नशिप फिर क्या क्या किया, आज की हिस्ट्री जानेंगे. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वेलकम ऑन बोर्ड यार. हाउ डू इट फील नाउ यू आर ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल? पहले तुम वहां बैठ के यूट्यूब वीडियो सुनते थे, नाउ यू आर रोल मॉडल. हाउ डू इट फील? Feeling awesome. Yeah, feeling good. Great. बहुत ही बढ़िया. Great. Let's begin. Quick introduction. What's your name? Are you engineer, non-engineer? Where are you placed? And summer internship कहाँ थी? My name is Gaurav Nivrekar and I am placed at Trinamics. I was doing my summer internship at Nestle India. It was in Fonda plant and it's actually good to be placed. बहुत Feeling बढ़िया. very good. Great. Superb. Hi. So, Jai Hind everyone, this is Kshama Dubey. I am from Varanasi, Uttar Pradesh. So, I have done my summer internship with Dabur and currently placed with Marico. Very good. Good. Hello everyone, Jai Hind. My name is Pooja Chawla and I am from very serene city, Narsinghpur, Madhya Pradesh. And I have done my summer internship at BNY Mellon, that is Bank of New York Mellon. And fortunately, I have got my pre-placement offer from the same company. That's lovely. Great. So hello everyone, my name is Amit Sartape and I hail from Pune, Maharashtra itself. And I have done my internship at Colgate-Palmolive and recently I have placed at Deloitte. बहुत ही बढ़िया. ग्रेट. तेरा पीपीओ क्यों नहीं आया भाई? तो पहले तो ये बता, फंडे बाद में देना. So the reason behind the PPO, I think lack of communication. I think I say because when I was giving an interview, it was totally online interview. So I feel like somewhere I was not trying to deliver what I want to deliver to the interviewer. So that I feel like something. After the summer internship. After the summer internship, after like 1 or 2 months, we got a PPI offer. PPI आया था. Very nice. Yes, Good. sir. So PPI offer. So I think I was somewhere lagging off. So that I think I lead to right now into Deloitte as a consultant. जिसको नहीं पता है, कॉलेज लाइफ इंटरेस्टिंग और मजेदार और हो जाती है बिकॉज कॉलेज के अंदर तुम घुसते हो एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज समर इंटर्नशिप. ठीक है, SIP बोलते हैं कई जगह पे. एंड यू फिनिश योर समर इंटर्नशिप का प्रोसेस व्हिच इज 2-3 months डाउन द लाइन तुम कैंपस में आते हो. इट स्टार्ट्स एंड योर समर इंटर्नशिप हैपेंस आफ्टर यू फिनिश 1 year. 1 साल खत्म होने के बाद. और जब वो खत्म हो जाता है उसके बाद इफ यू डू अ ग्रेट जॉब देन द कंपनीज गिव यू PPO और अ PPI, प्री प्लेसमेंट ऑफर और अ प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू. समझ आ रहा है? प्री प्लेसमेंट ऑफर मतलब, PPO मतलब आई लाइक यू, आजा भाई अमित, आजा मेरे साथ काम कर ले, सीधी बात है. राइट. एंड PPI मतलब तू पसंद तो है पर तेरा इंटरव्यू लेंगे, एक बार दोबारा देखेंगे. हाँ, तो विच इज फन. बोथ का इक्वलेंसी लेवल रहता है पर अगर आप PPI कन्वर्ट कर लेते हैं. सुपर यार. तो मूविंग इन फॉरवर्ड तो बढ़िया, तो इसलिए PPO नहीं आया. हाउ अबाउट यू? तेरा क्या स्टोरी है यार पूजा? Okay, so first of all, company came into the campus. Then I have given like interviews for the summer internship. Then I got selected there. गई मैं वहाँ, I did my work and I think they liked my work because the one thing that I'll say is something, punctuality is the major thing that I feel that they liked in us because there were people from IIMs in very good colleges that were doing internship at the same time with us. But the reason behind me getting my pre-placement offer is I feel like the punctuality that they liked in us, that the people from IIBM, they were very punctual. They're coming on time, going on time. Yes, exactly, because that was taught in college. Yeah, exactly. And also one thing that was grooming where I have got this compliment at the last day of my internship that how other people used to come was very different from you people because we have to send photo to the college.
So we used to go very well dressed because we know that we had Formals this पहन के restriction. एकदम Exactly. full, And every day we used to go in formals only. So I think these were the two major things that I feel. काम करना पड़ा, communication was also a key. ये सब चीजें थी, but along with that, these were the two major things that I think this is the main reason behind getting a PPO. बढ़िया. काम करना एक तरफ है, 2 महीने में तुम नकली काम भी कर सकते हो, बट तुम्हारा जो एटीट्यूड है लाइफ का, वो चीजें समझने के लिए टाइम लग जाता है. अगर पता चल जाए, मैं आज मैम से बात करता, पूनम मैम, हु इज हेल्पिंग यू गाइज ग्रो एंड ग्रूम एंड गेटिंग इनटू गुड प्लेसमेंट. नेस्ले इज कमिंग ऑन कैंपस, यहाँ पे काफी प्लेसमेंट अच्छी जा रही है. तो मैम एक बात बोल रही थी, कंपनीज लुकिंग फॉर, इसको मोल्ड कर सकते हैं कि नहीं? पढ़ाई सबको आती है, बैलेंस शीट सबको देखना आता है यार, वो बाय डिफॉल्ट है. वो नहीं आता तो आगे बढ़ नहीं सकते, वो तो है ही है. तो यार अपना एटीट्यूड, समय पे आ रहे हो, समय नहीं दे जा रहे हो. आजकल की डेट अगर मैं बोलूंगा तो टॉक्सिक हो जाएगा, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन आई जॉइंड GE, जनरल इलेक्ट्रिक, my ex company, if you remember, from YouTube days. So my boss told me, be like that good cute guy who's coming on time, leaving on time, and try to come before your boss and leave after your boss. मैंने बोला yes ma'am, that makes sense, of course. मैं तो भी employer, PPO चाहिए मैम, बिल्कुल. अब आज की डेट में बोलो, it's going to say like it's going to be toxic. अरे यार काम करना है, it's okay, right? Would you, when you are a boss, would you appreciate a guy who's coming before you and also leaving after you? Absolutely, yes. You would appreciate it? Yes. Right? छोड़ो toxicity, छोड़ो जैनदी, छोड़ो एक मिनट के लिए. Would you appreciate it? Yes. Right? Of course. ऐसा नहीं कि तुम जबरदस्ती बिठा के रख रहे हो 9 बजे के बाद. ये हमारे जमाने में होता भी था कि बैठ भाई, तू लेट जाएगा. वो मेरे से भी पहले जमाने में होता, but things have changed right now. Good यार, अगर PPO चाहिए, सब मेहनत तो करनी पड़ेगी. That's a good one. What worked for you, and tell me more about you. So basically, I have done my summer internship with Dabur in Thane region. From like there, I have क्या done. बेच क्या रही थी आप, ये बताओ पहले. Yes, sir, absolutely. So they assigned me the multiple their newly launched product to me. So I have to enhance the visibility of that particular product. So yeah, so there are 4 products which assigned to me: Cool King oil, Cool King talcum powder, and then Mr. Arm and Bay Fresh toothpaste, gel-based toothpaste. So these 4 products I have to sell in Thane region. So from there, I have learned multiple skills, how to convince, how to negotiate, and how to किसको बेचना है? so the retail shops. My whole work goes around to visit the retail shops, general model. General trade model. So there I have worked like this. From there I have learned the art of selling, how someone can be good at selling. So that skill, that convincing skill helped me to get placed with Marico. ओह अच्छा. So डाबर में तुमने जाके रिटेलर से बात करी और उसको बोला कि भाई ये दुकान पे रख अपना सामान. Yes. ये हमारा क्या था, कूल किंग. Cool King oil and Sounds cool. like Cat King, but हाँ. But Cool King oil अपनी दुकान पे रखा और बेच तेल. अच्छा, वाह, very nice. And that helped you getting Marico. Yes. अभी तुम नारियल तेल बेचेगी, पैराशूट. हाँ, yes, absolutely. डाबर की अमिका करके, Amika Kumawat. She You was know? my area head. I know She is her. my student. Oh. अरे अमिका, she's a dear friend now. She comes on the YouTube channel every day. In fact, कल ही नारसी मुझी, she's from NMIMS Yes, Bombay. Yeah. yes. अरे, I know her. Yeah, she worked with Cat King before. Yeah. Now she's quit. She moved on, by the way. She left Dabur. Okay. Yeah. Now she's in Johnson & Johnson's. Okay. World is small. Great. हाँ भाई, तो बताओ. So I'm doing supply chain management. So while I was doing my internship in Nestle, I was a supply chain intern. So वहाँ पे एक नॉर्मल यही था, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और नॉर्मल जो SOPs रहते हैं उनको मुझे इम्प्रूव करना था. So what happens with Nestle is that since Nestle is very good in the people culture, वहाँ पे लोग ज़्यादा छोड़ते नहीं है. So if you get the मतलब PPI अगर मिलने का चांस है तो you have to wait for someone leaving there. अच्छा. So काम कितना भी अच्छा करो, स्क्विड गेम खिलाते हैं क्या रोज? कौन एक को मरना पड़ेगा आगे रहने के लिए. अच्छा, वही नहीं. So that was the reason I didn't get PPI. It doesn't offer PPO because I was a part of Nesternship program. अच्छा. People might be knowing that. नेस्टर्नशिप क्या है? नहीं हमें नहीं बताओ. Nestle का प्रोग्राम है Nesternship. नेस्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम. Nesternship, yeah. So there people from different backgrounds like BSc, MBA, everyone can apply for that, and roles open like quality assurance, marketing, supply chain management, financials. Great. तो PPO तेरा भी PPO नहीं आया, तेरा भी नहीं आया. But sir, You got- actually when I entered to that corporate exposure, I saw like many managers were there.
big corporates. Like it was first time like going into big corporate, and I was like flabbergasted, like what kind of these things they are doing. And secondly, I was working into SAP FICO, so it was a totally ERP system. So when I entered to that like into the business, I saw like what actually they are doing. Like it was out of our context. What we have done over here, what we are going to do there, it was It's totally different. Theory और वो practical देख के लगता है भाई पढ़ क्या रहे हैं हम Yes, ना? exactly. What the hell is going on? Yes, sir. So we were just working on our laptop, but when we went there, we saw that like we have to work like business process, totally business process. So after when I got like PPI, even my manager said, "Why don't you got selected? What is there? What is like what? Where did you lack this?" So many things were happening. I said like, "Sir, it may be a luck of factor." I think. So that was the. That's good. Great यार. So let's talk about tier 2, ठीक है? Let's assume we are a tier 2 school. I know you will say tier 1, but ठीक है. Let's assume we are a tier 2 because and let's give them a ज्ञान कि जब तुम एक tier 2 स्कूल में अंदर ज्वाइन करते हो, तुम्हारा तो कॉलेज लकी है, तुम लोग कंपनीज लेके आ रहे, कई जगह पे कंपनीज नहीं होती है, राइट? बट द मार्केट्स वर टफ व्हेन यू जॉइन द कॉलेज. यू मस्ट हैव हर्ड आई एम इंदौर में ये चल रहा है, आई एम लखनऊ में ये चल रहा है, नौकरी लगी लोगों की. व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन गोज इनटू टू गेट अ गुड प्लेसमेंट एज वेल? बिकॉज हम तो फाइनल आउटकम की बात कर रहे हैं. ओ वाह डिलॉयट हो गया, ओ वाह नेस्ले हो गया, मैरिको हो गया, कोलगेट पावर, ये छोटे नाम नहीं, बहुत बड़े बड़े नाम है. ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जो हम बातें कर रहे हैं. ऐसी ये कई लोग जो यूट्यूब सुन रहे हैं उन्होंने सपना भी नहीं लिया है, या तुमने भी नहीं लिया होगा जब तुम उस साइड पे थे, राइट? अभी तुम हो गए हो वहां पे. तो क्या क्या प्रिपरेशन में, रिज्यूमे फॉर एग्जांपल क्या क्या जाना चाहिए? लेट्स स्टार्ट विद पूजा. पूजा रिज्यूमे बनाना है तो क्या करें? Okay, fine. So, if I talk about the resume, because अब मैं जब हूँ यहाँ पे, if I have got the PPO and after that I see the scenario and everything, तो there are certain companies जो resume जाने के बाद ही they reject कि हमें लेना ही नहीं है. So मतलब वो समझ में आता है कि there is something lacking in your resume. So what I can as a finance student, what I'll suggest is like जो भी हमने किया है, एक वो सिर्फ इंटर्नशिप के जाना या फिर एक्सपीरियंस जाना, वो चीज़ें वहाँ तक रिस्ट्रिक्ट नहीं होती हैं. बेसिकली इफ़ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट्स और समथिंग, अगर मैंने हेज फंड लिया तो मैं हेज फंड के ऊपर एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ, उसमें डाल रही हूँ दैट आई हैव मेड अ प्रोजेक्ट ऑन हेज फंड. अगर मैं बॉन्ड डील एनालिसिस कर रही हूँ तो मेरे पास एक प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए कि मैंने बॉन्ड डील एनालिसिस किया है तो इसके प्राइस चेंजेस के उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है. एज अ फाइनेंस स्टूडेंट आई एम सेइंग, तो मेरे पास ये सारे प्रोजेक्ट्स भी होने चाहिए. मैंने इंटर्नशिप क्या की है, प्रोजेक्ट्स क्या किए हैं, प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट्स हम डाल रहे हैं तो दे आर मेकिंग अ बिग डिफरेंस कि किस तरीके से हमारा उससे जो CV है वो एनहांस हो रहा है. बिकॉज कंपनी एकेडमिक प्रोजेक्ट्स हैं या अकेडमिक्स भी हैं, बट उसके अलावा कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें खुद से भी करनी पड़ती हैं, जो आपको कॉलेज में नहीं कराएंगे, बट दिस इज समथिंग. जैसे ये प्रोजेक्ट्स हैं तो ये सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं रहेगा कि दैट यू हैव टू डू बॉन्ड डील एनालिसिस या क्या, ये कोई भी हमने एक टॉपिक, वो आपको टॉपिक पढ़ा देंगे कि बॉन्ड डील एनालिसिस में ये होता है, पर उसके ऊपर आपको रिसर्च करना कि आपने एक लाइव एग्जाम्पल लिया, उसके प्राइस चेंज किए, एक्सेल पे आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, फिर उसके ऊपर आपने एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार कर दी. पर्सनली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ कि मैं खुद से कर रही हूँ, तो मुझे टॉपिक पढ़ा दिया. कॉलेज में भी ये सारी चीजें कराई जा रही हैं एक्स्ट्रा. तुम जाओ प्रोजेक्ट ढूंढो कहीं पे करो, कोई प्रॉब्लम में डिफाइन कर दे, बढ़िया बात है, नहीं करे तो करके रखो. हाँ एग्जैक्टली, मतलब दिस इज नॉट समथिंग कि सर्टिफाइड होना चाहिए, बट दिस इज समथिंग कि एक टॉपिक आपने लिया, आपको क्लास में बता दिया ये टॉपिक है, बट उस पर आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेने के लिए, बिकॉज यू नो थ्योरी जब हमें पढ़ाते हैं, मैं अपने ऑफिस में भी गई, देन आई सॉ समथिंग कि जो भी मतलब चीजें थी मुझे यहाँ पे जब पढ़ाई गई, हेज फंड, मैंने हेज फंड की डेफिनेशन पढ़ ली, हेज फंड के फीचर्स पढ़ ली, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, बट जब मैं वहां गई और मैंने वो काम देखा तो मतलब वो दैट वाज टोटली डिफरेंट. तो मतलब जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे हम जाते हैं ना, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है. वो कंपनी पीपल नोस कि इनको ये सब नहीं बनेगा. तो जब आप ये प्रोजेक्ट्स डालते हैं या फिर कुछ करते हैं तो उनको ये समझ में आता है कि यू हैव दैट प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एक्सपोजर, कि आपको एक्सपीरियंस है कि अगर मैं ये चीज प्राइस चेंज कर रहा हूँ, ये कुछ भी कर रहा हूँ, तो वो चीज का इम्पैक्ट क्या होने वाला है. तो दैट इज समथिंग, यू नो, दैट विल मेक अ बिग डिफरेंस, बिकॉज यू नो इन योर माइंड कि इस चीज का इम्पैक्ट क्या होने वाला है, एंड यू विल बी एबल टू पुट इन द प्रैक्टिकल थिंग. अंडरस्टूड. सो जब तक थ्योरी पढ़ के अगर तुम 10 लाख 15 लाख 20 लाख एक्सपेक्ट करो, कोई देने वाला है नहीं. एग्जैक्टली. सो तुम्हें थ्योरी के साथ उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन, इट कुड बी इंटर्नशिप और एन एक्सटर्नल प्रोजेक्ट व्हिच यू शुड पिक इट अप, व्हिच दे लाइक, यार ये अपनी जैसी लैंग्वेज काम, ये काम कर सकता है. Also some certificates like from NISM, and they will give you an extra privilege. NSM कर लो, NCFM कर लो, अगर फाइनेंस में कर सकते. And also what extra things you are doing to make yourself as a unique, as like to highlight your USP, so that what extra you are doing and adding in your resume, that will make you extracurricular activities. Extracurricular like आपने कहीं पे if you are part of Rotrector, you are doing some internships, like our college provides a winter internship. So यहाँ पे आप NGOs में जा रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो. So ये अभी
companies also want people to be CSR molded like Yeah. CSR towards CSR also. So you have to be like agile enough to do whatever thing कि करना करना है. बहुत ही बढ़िया, great यार. Another thing that I have seen, like I was checking the CVs of my juniors. So what I have seen, what is their objective when we are keeping into the CV? I have seen that some of them students are having objectives different, and whatever the like content they have put in the CV, that is totally different. So some wants to go into taxation profile, but their objective is analyst. It is about like portfolio management. So they should understand what actually they want to do. Like they need to put their strength, what actually they are having. So what they can put onto a table, what they can bring into the table while doing giving an interview. Then another thing, like going through the like software like Tally, Tableau, Excel, ERP. So these are the systems they should know right now, because that is actually a marketing like. That's lovely. In interest of time, I'm going to keep talking to you, but one last parting thoughts to all our people. They are also sitting inside tier 2 colleges or confused है ये वाला college जाएं कि ना जाएं. Well, you guys have lived these companies, great companies. One small thought which you want to give it out. Let's start with Ms. Chawla. Okay, so what I'll say is college doesn't matter that which college you are going, company to will come and go, but only thing that you will take a good placement or not, that depends on you, that how you perform, how confident you are, and how much you are working on yourself. So keep working on yourself and keep yourself updated, then the companies will definitely take you. That's lovely. What's your take? And also, while selecting a perfect college for you for PGDM program or anything, so first thing you have to do a proper research for that college, and also talk to their strong base alumni network. You will get to know where that alumni team working in top colleges, top companies, and how they are working, in what profile they are handling. बहुत जरूरी जानना Yes. कहाँ जा रहे हैं. Good. Yes. So I would say that pan out what you want to become like. You have to select your domain area first only, and then build yourself towards that. Now you have to have some certifications for that. Suppose say you have to become an analyst or a consultant. Aim towards that, and companies don't matter. Your will matters first. So आपको college कोई भी अगर आप ले रहे हो तो वहाँ पे college will give you the chances, but you have to prove yourself. You have to prove your mettle. So please work towards that. We have done, so that's why we are standing here. बहुत ही बढ़िया. Any parting thought? Yeah, what I think is, as I'm residing from Pune itself, so though like I'm having a number of colleges, like I can choose whatever, but choose what, like you should have a clarity. What is first, like first thing, that is clarity. Until and unless you are not having clarity, you can't choose a college or you can choose a domain what you want to go. So have a first clarity what you want to do. For example, if I want to go in a finance where I love a technology, so this is the college where I feel there is a blend of finance and technology, which I'm going for the SAP, and I got shortlisted to Deloitte as a consultant. So have a clarity about what you want to do, and yes, of course, whichever college you will go, there will be a good like communication. They will teach about communication skills, because that is more important. Until and unless you are not having good communication, you cannot deliver what you want to deliver into the. और बहुत ही thank you so much for your time. It was pleasure meeting you. तो भाई do it on the like button और मुझे कमेंट करके बताइए तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारा क्या सपना है, कौन सी कंपनी में काम करना चाहते हो, क्या तुम रोल ढूंढ रहे हो, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, मुझे कमेंट करेगा एंड विल हैव अ डिस्कशन. अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है सर फ्रेशर के लिए मार्केटिंग ठीक है या फाइनेंस ठीक है, कोलपाल में कैसे जाना है, कोलगेट पामोलिव, नेस्ले में, विल डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन. टेक केयर गाइस. बाय बाय. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, sir.